Hello bachcho, how are you all? So let's study light and reflection. So make your notes with me and learn about light. Hello students, how are you all? कैसे हो आप सब? I hope everything is good. सब अच्छा चल रहा है और अगर पढ़ाई नहीं भी हो रही है थोड़ी सी तो चलो हम साथ पढ़ते हैं. Let's see what is the topic which I have taken today, and that is very interesting topic. That is something about light. Okay, so this chapter is chapter light and reflection. So what are the things that we learn in this chapter? They are, what is light? Fine. Sources of light. Propagation of light. Propagation means how light moves. Okay. Next is, what are the natural objects that emit light? Fine. And plus some artificial objects also we'll see. Next, formation of shadow. How shadow is formed. Okay. Next is how to make pinhole camera and what is pinhole camera. I will make one extra video on how to make pinhole camera. And the last one is reflection or lateral symmetry. So these are the following topics that are in chapter light. So let's start. What is light? So what is light? Light is one of the most important form of energy. Now, what is energy? Energy is that help us to do work. How light help us to do work? Like, सोचो अगर if there is no sunlight, can you ever think of the life possible on earth? No. Why? Because the photosynthesis by which the plant make food, it starts only by the sunlight. So sunlight triggers the photosynthesis and plants make food. And plants make food. So animal depends on plant. Animals depend on plant, and we depend on both animals and plant. So indirectly everything depends on light. Fine. So that is sunlight. Fine. If we talk about our home, there are many things that happens with the help of light. So light is a form of energy. So one example that I have given you, sun, that is a natural source of light. So two type of sources are there. One is natural, other is artificial. So natural means like the sun, stars, fireflies. फायरफ्लाइज को बच्चों हम कहते हैं जुगनू. सो जुगनू जो होते हैं रात में देखिए जब चमकते हैं थोड़े देर शाइन. व्हाई दे शाइन? बिकॉज दीज इंसेक्ट जो जुगनू होते हैं फायरफ्लाइज, दे हैव अ स्पेशल प्रोटीन होता है इनके पास, इनकी बॉडी में, जो शाइन करता है रात में. दैट प्रोटीन नेम आई रिटन हियर, इट्स नेम इज ल्यूसीफरेस. Because of this protein, the fireflies, they seems that the light is inside. Okay. Next come to the artificial sources like bulb, rods. Rods means जो electric rods होती हैं. Fine. Candle, lamps. These are the some of the sources which we have made. Fine. And these are the sources which are naturally present on earth. Now we have learnt the different sources of light. Now let's see the objects that have their own light or that illuminates, and the sources which are visible but not luminous. So the first one is luminous object and non-luminous object. So luminous object or bodies are those objects that emit light of their own. वो उनकी खुद की लाइट होती है जो वो देते हैं. जैसे कैंडल को आप जलाएंगे ना, सो कैंडल अपनी लाइट देगी. सो कैंडल इज ल्यूमिनस. ऑयल लैम्प्स ल्यूमिनस. सन ल्यूमिनस. स्टार्स ल्यूमिनस. फाइन. नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट नॉन ल्यूमिनस. So bodies or objects that are visible when they are illuminated by luminous object. जैसे मैंने यहाँ एक कैंडल जलाई. फाइन. रूम में अंधेरा है, ठीक. Room is fully dark, or I have put a burning candle, or the moment I put a burning candle, I can see the other person standing. I can see my cloth. I can see my cupboard. So cupboard, cloth, and the person, they all are non-luminous. Why? Because they are visible only when I have burned the candle or I have lit the candle. जैसे you can see me. Why? Because there is a light in the whole room. Now if I turn off the light, can you see me? A little bit you can see me because it is a daytime.
Fine. So this means that I am non-luminous. Fine. I can only be seen when I have enough light around me. So example are, moon is illuminated. When moon is illuminated? When it is illuminated by sun. So you can see moon because moon takes light from sun. Or moon reflects the light which is coming from sun. Same as cloth, paper, water, we all are non-luminous. I hope it is clear, bachcho. So the next one is, after luminous and non-luminous, let's come to another, that is known as propagation of light. Propagation means होता है going और moving ahead, आगे की तरफ बढ़ना. तो लाइट आगे की तरफ कैसे बढ़ती है, that we will see under this topic. So propagation of light means, suppose you have a light source. So suppose I have this torch. Now I have turned on the torch. Fine, can you see my torch? So this torch, if I turn on the light of this torch, so what will happen? The light always goes straight. It will not move up, it will not move down, it will move always straight. So propagation of light means that light always travel in a straight line. और इस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. आई होप चिल्ड्रन यू हैव सीन माई वीडियो ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन. हैव नॉट सीन, गो थ्रू दैट वीडियो बच्चों. उसमें आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज रेक्टिलिनियर. रेक्टिलिनियर मीन्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जैसे कार एक लाइन में चलती है, ऐसे ही लाइट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ rectilinear propagation. Why? Because light always travel in a straight line. अगर light source यहाँ है तो ऐसे पड़ेगी, ऐसे नहीं जाएगी. अगर light source यहाँ है तो it will go like that. So it always travel in a straight line. Fine. Let's do one small activity that indicates that light travel in a straight line. So for that, what you need? Like, you take this cardboard. I have taken a piece of cardboard. आपके पास नहीं है तो you can take a small piece of paper also and you fold like this. ठीक है, ऐसे बना लो. ठीक है, अब क्या होगा? अब now can you see my two fingers? Can you see my two fingers, children? Can you see my two fingers? Yes. Is it visible, my two fingers? Yes, my two fingers are visible. Why? Because the light which is coming and you can easily see my two fingers. Now, if I make a fold here, like if I turn and make a fold, like fold. So what I have done, I have held the path of light. Now you just check. Can you see those two fingers? No. Can you see my two fingers? No. So what I have done, I have actually halted. When I halted, then what happened? The light which is moving straight, तो बीच में क्या आ गया? पाथ रुक गया. और जब पाथ रुक गया तो उधर वाला ऑब्जेक्ट जो था which is on the opposite side cannot be seen. So this is a small activity. With this small activity, we can say that light always travel in a straight line. Okay, one more activity children I will show you. If you have this small laser light, अगर आपके पास है ये, तो this is very cheap, hardly 30-40 rupees की you will get. I will show you with the help of this that light travels in a straight line. You also this experiment at your home. So let's start now. Can you see the path? No. Can you see the path here? No. Can you see the path here? No. So, but light always travels. See, light always travel in a straight line. Now, I will show you the exact path. Now, see the path. Isn't it so beautiful? So, have you seen the path? Did you enjoy it? You can also do this experiment at your home and show your parents that light actually travels in a straight line. How this happened? I have made a separate video of this where all the activities related to light I have given. Now I will show you the path in jar also. Like you take one jar, okay, fill this with some
fill this with some smoke. How you can fill this smoke? So what you do, you just take a burning paper and keep it inside and then cover it. Or if you have like essence stick or if you have धूप बत्ती तो आप इसमें डाल दो and then you just look at the path. See, can you see the path? How beautiful the path of light is showing here. This shows that light always travel in a straight line. This indicates that light always travel in a straight line. Isn't it beautiful, children? अच्छा लग रहा है ना? You will also do this experiment and understand the rectilinear propagation of light. Next topic is reflection. Before we start this topic, I'll tell you a small story. There was a lion in a jungle जो बहुत weak हो गया था. So what the lion said, all the animals in the jungle, he said that I cannot come and catch you, so you need to come one by one to me and I will eat. So one day there was a chance of a rabbit. So rabbit got an idea and rabbit went fast to the lion and said, lion, lion, I got another lion and I got stuck. So please come and just kill that lion because the lion is saying that I am the king of the jungle. How it is possible? You are the king of the jungle. So the lion and the rabbit, they both went to the कहाँ गए थे? Yes, well में गए और well में उसने कहा देखो see the lion, another lion is inside. So when the lion saw the reflection of the lion was seen on yes water में दिखाई पड़ा lion का reflection and lion thought that it is another lion. Lion jumped and killed. So the story was, the moral was, it was a reflection. Fine. So here what we are going to learn, what is reflection? कैसे दिखता है reflection? So it is a phenomena. ये एक ऐसा process है where the light bounce back. Means पहले light source से आती है और किसी चीज से टकरा के वापस आ जाती है तभी आपको वो चीज दिखाई पड़ती है. Fine. So the light, so the ray which comes and falls on a particular object is known as incident ray. ये जो ray of light आई, देखो ये ray of light है ना, मैं कहाँ से लाई हूँ एक source. This is a light source. Fine, this is a light source. ठीक, यहाँ से क्या हुई, ये ray आई और ये किस पे fall की. This is an object. It can be any object. ठीक है, कोई suppose आपकी बुक ही है, ठीक, और इस पे पड़ी और ये वापस रिफ्लेक्ट की. जब ये रिफ्लेक्ट की, so that ray is known as reflected ray and this ray is known as incident ray. So because of this reflection only आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई. Next, let's see the reflection of light. So for the reflection of light, I have taken the same jar and I have filled this jar with smoke and I have tightly covered it so that no smoke can come out. See, I have put a burning paper inside so that the smoke can easily filled. In place of burning paper, children, you can put a small essence stick also. So the first I will show you that light travels in a straight line that you have already seen. Now see the reflection of light. When can you see the reflection? Is it visible, children? Is it visible? See, two lights are coming. One from the laser light, other is reflected from the glass surface. As I have taught you that the shiny opaque object reflects the light. So see, can you see the reflection? One is going straight, which is dark. Other is going up. Can you see the reflection, children? Can you see? Reflection क्या होता है? That we have just seen now. Now, reflection can be done by two ways. Depending on किस तरह की surface है. If the surface is smooth and shiny, then you can see a clear image. Fine. जैसे कि कहाँ दिखता है हमें? Mirror में. So if we see in a mirror, तो we can see a clear image of ours. पूरी साफ दिखती है ना आपको अपनी? क्यों? Because in the mirror, the surface is smooth. Fine. So one more thing, like if a water is clean and calm, अगर वाटर बिल्कुल शांत है तो जो साइड में पेड़ होंगे उनकी पूरी छाया आपको इमेज कहाँ दिखेगी? पानी में. You can easily see. पूरे उल्टे दिखते हैं ना पानी में ऐसे. Fine. So you, for example, can you see that the incident ray and the
reflected ray. Incident ray and the reflected ray. Incident ray and the reflected ray. So all the incidents are parallel and all the reflected rays are parallel. Fine. So this indicates that कि जो surface है हमारी वो smooth है. ठीक. अब now if I take a mirror, suppose this is my mirror, तो see mirror का जो surface होता है that is smooth. So जितनी light पड़ती है वो उतनी ही reflect होती है. And as it reflect and come to my eyes, I can see my image. Fine. Now in other case, if the surface is rough, now let's see when the light falls on it, and the light falls on it. So surface are क्या है, कोई rough है, ये these are rough surfaces ना. Rough surface होने की वजह से light का जो reflection है, it can be in any direction. जैसे पड़ेगी वैसे reflect होगी ना. जब यही नीचे का rough है तो उधर कहीं इधर चली गई, कहीं इधर चली गई. Fine. तो क्या होगा, image will not be seen. Image will not be seen or the proper image cannot be seen. For example, if you see a stone, if you see a wood, अगर आप stone को आप अपने आँख के पास रखो, can you see your image on stone? Can you see your image on wood? नहीं. मगर अगर आप अपने घर की एक थाली लेते हैं, फाइन, या अपने घर का स्पून लेते हैं, if it is shiny or smooth है, and if you see that in front of you or if you keep it in front of you, you can see your image on that thali also. So reflection, it is regular and irregular. So after the light travels in a straight line, let's see what is ray and what is beam. Ray means a single line. Single line means that move ahead. So a thin straight line with an arrow ahead. Ray होता है ना, suppose अगर ये sun है मेरा, this is the source, और ये जो straight line आती है ऐसे arrow, that is called ray. Fine. And what is beam? Beam is a broad stream of light. जैसे sun से एक single को हम कहेंगे ray. Fine. और पूरी जो group of rays आएंगी, that is called as beam. So what is beam? Beam is a broad stream of light containing a large number of rays. Can you see that large number of rays जो एक साथ आती हैं? That is called beam, and a single line of light is known as a ray. Fine. So after this, let's learn what is converging and what is diverging. The next topic, that is converging rays and diverging rays. After seeing what is ray and what is beam, so let's see the next topic, that is converging. Converge means होता है coming to one point. सारी light एक जगह आए. Converge. Fine. So these two are just opposite words. So converging rays, light rays which travel to meet at one point. जैसे for example, ये अगर sun है, suppose ये sun है, तो ये सारी sun की light एक जगह meet हो. Fine. That is called converging. और ऐसा कब होता है? अच्छा, fine. I'll give you one example. Suppose if you have a tooth problem और आप dentist के पास जाएं, fine, and you say I have a tooth problem, तो dentist क्या कहेगा? You just lie down, open your mouth, और फिर वो एक glass लेगा या वो एक mirror लेगा जिससे वो आपके mouth में देखेगा. तो see, सारी light जो थी, जो lights ऊपर है, उसने अपने मिरर में क्या की, वो सारी लाइट्स ली. क्यों? क्योंकि वो आपके मुंह के अंदर आपके टूथ को देखना चाहता था. सो एट दैट टाइम वहां जितनी लाइट थी वो सारी कन्वर्ज हो रही हैं उस ग्लास पे जो उसने आपके मुंह पे लगाया. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जिंग रेज. लाइक ये क्या है, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं. ठीक है. सो क्या करेंगे, सी आई हैव रिटन हेयर साइंस मित्र एस. Fine. Now, can you see that bigger one? Can you see the bigger one? Can you see my eye, the bigger one? Can you see? So, why this S, it seems to be bigger? Why? Because here what happened? All the light which is falling on it, they are actually converge. ये एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, तभी आपको जो नीचे का ऑब्जेक्ट है वो
बड़ा दिखाई पड़ता है. फाइन. सो दे सेम हैपेंस विद दोज मिरर एंड लेंसेज दैट द डेंटिस्ट दे आर हैविंग. वो क्यों चाहते हैं? बिकॉज दे वांट कि आपका जो टूथ है या टूथ में जो प्रॉब्लम है या जो कैविटी है वो इनको मैग्निफाइड दिखे. So magnified दिखने के लिए what they want? They want all the light come on one point. Fine. So this is the best example of converging rays. There is one small experiment. अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो. आप जब धूप निकली हो बाहर बच्चों तो टेक दिस मैग्नीफाइंग ग्लास और एक पेपर नीचे लो. टेक अ पेपर. इस पेपर को सपोज आई हैव डन दिस एक्टिविटी तो मैंने क्या किया है, सिंपल पेपर लिया है और पेपर के ऊपर मैंने इस मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे रखा. ठीक है. इसके बाद में गो आउटसाइड अराउंड 11 और 12 o'clock जब बिल्कुल हॉट सन हो. ठीक. डू दिस. आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, योर पेपर विल स्टार्ट बर्निंग. See, after some time what happened, your paper will start burning. Why? Why? See, it started burning. Why it started burning? The paper has started burning. The paper started burning. Why? Because all the sun radiations जितनी भी इसके आसपास है, they all are meeting at one point. और जब एक point पे meet हो रही है, तो वहां पे heat बढ़ गई और जैसे हीट बढ़ गई क्या हुआ, पेपर में आग लग गई. सो दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू बट विद द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स यू कैन डू. फाइन. नेक्स्ट कम टू डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग मीन्स स्प्रेडिंग. डाइवर्ज जैसे आपने देखा होगा व्हेन द रोड्स आर देयर तो लिखते हैं ना डाइवर्जन है इस तरफ है मीन्स डाइवर्जन. यहां से ये चीज ऐसे मुड़ेगी या ये चीज ऐसे मुड़ेगी. सो डाइवर्जिंग रेज मीन्स लाइट रेज विल स्प्रेड आउट from a point source are called diverging rays. Can you see that? They are diverge. For example, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में जो आगे हेडलाइट लगी होती है ट्रेन की वो क्या होती है, डाइवर्ज होती है. क्यों? क्योंकि आगे उसको पूरा पाथ देखना होता है. सेम आपकी जो कार्स की जो हेडलाइट्स होती है ना आगे लगी होती है, जब कार की लाइट्स पापा ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो डाइवर्ज करती हैं सो दैट जो पूरी रोड है दैट कैन बी इजिली सीन. तो यहाँ पे क्या होगी, ये डाइवर्जिंग रेज है. यहाँ पे क्या है, ये कन्वर्जिंग होगी. जब कन्वर्जिंग होगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा दिखाई पड़ेगी. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रेज. आई होप इट इज क्लियर टू यू. वन इज नोन एज कन्वर्जिंग, अदर इज नोन एज डाइवर्जिंग. क्लियर बच्चों? After see that light travels in a straight line, we have one more application that is pinhole camera. It is just like a normal camera. जैसे आप कैमरे में फोकस करते हैं, you see the image, आपके कैमरे के स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई पड़ती है. It is same but it is very simple to make. Let's see how to make the camera. Is what the camera has. So what are the things we required? Let's quickly see. So to make a pinhole camera we require empty box, we require a butter paper, we require a pin for a hole and we require a candle. So the first of all, if you take a box, like if you do not have a cardboard box, you can take the simple this empty glass. Okay, this is just a paper glass. If you do not have, you can take any cardboard. Fine. Now any box which is of cardboard. ठीक है, जिसमें जैसे सपोज आपके पास अगर बल्ब का खाली बॉक्स है तो उससे भी बना सकते हैं आप. ठीक, बस क्या होना चाहिए, एक तरफ का बंद हो और एक तरफ का ओपन हो. फाइन. सो दिस साइड विल मेक स्क्रीन एंड दिस साइड वी विल मेक होल टू see the light or through which the light can enter. So I have taken this. After this I have colored. See now, colored with black paint. So this is now colored. Now this is open side where I put the screen and this side which is closed. You will make one hole. Like I have made many hole. First you will make one hole. Okay. पहले हम एक से इमेज देखेंगे फिर विल मेक मेनी होल्स. ठीक है, उससे हम देखेंगे इमेज. फाइन. सो दिस साइड यू हैव मेड होल्स. नाउ दिस साइड यू विल पेस्ट or if you have a butter paper like this type of butter paper, if you have, you take a butter paper. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सिंपली लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे. If you can paste it is okay. If you can paste it is okay. Otherwise take a rubber band and just put it like this I have put. Fine.
So this side I have made hole and this side is a screen now. My pinhole camera is ready to work. Let's see, I have made two. So in one I have made only one hole, see, and in other one I have made many holes. So I will show you the image which is formed from both the cameras. So in both the cameras the light will come from the pinhole and the image will form on the screen. Okay, in this also light will come from all the pinholes and the image will form on the screen. So let's see how the image is formed. For that I just need a burning candle. So I am going to taken a candle I have taken, and this is my pinhole camera. So from the whole side we will put the light. To see, this is the light source, and from here the light enters and my image is formed here. So I am keeping this candle just in front of the hole. Now let's see what will happen. I will turn off the flame only by the light which is coming from the pinhole. उस छोटे से होल से बेटा जो लाइट आ रही है उसमें आपको बिल्कुल रियल इमेज दिख रही है. एंड कैन यू सी द रियल इमेज इज इन्वर्टेड इमेज. फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू यू. फाइन, इट इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन. So children, can you see all the inverted images form on the pinhole camera? See, I have made many inverted images. I have put only one light source, that is candle, and here are many pinholes. So from this pinhole, can you see that many flames are there? And see how beautiful are flames. So pinhole camera works on the principle that, किस पे काम करता है कि light always travel in a straight line. जैसे let's see one example. ये पूरा एक ट्री है, ठीक है. अब क्या होगा, लाइट ऊपर से आई, अब यहाँ से आएगी, जो लाइट सामने से आ रही है वो तो आगे को नहीं जाएगी. क्यों नहीं जाएगी बच्चों? क्यों? क्योंकि वो जो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है इसकी शैडो बन जाएगी. फाइन, लेकिन जो लाइट यहाँ से जा रही है, सपोज जो ऊपर से आ रही है, ये स्ट्रेट जाएगी. और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सपोज दिस यू आर स्टैंडिंग हेयर, आप यहाँ पे स्टैंडिंग है. फाइन, ठीक. अब नाउ सी, दिस इज योर कैमरा. इस पिन होल से आपको ये ट्री देखना है, ठीक है. सो क्या होगा, इस पिन होल से जितनी लाइट इस पिन होल कैमरा से अंदर जाएगी, सो दिस विल गो, यहां से जो लाइट हुई दिस विल गो स्ट्रेट डाउन. सो जो ऊपर का हिस्सा होगा वो कहाँ दिखाई पड़ेगा, नीचे. आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है. और जो नीचे का हिस्सा होगा, जब ये इस तरह लाइट जाएगी तो दिस विल बी इन्वर्टेड. फाइन. सो स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिखाई पड़ेगी वो कैसी दिखाई पड़ेगी, उल्टी. सो दिस इज एक्चुअली अ रियल इमेज. ये एग्जैक्टली रियल इमेज ही होती है बच्चों, जो हमेशा हमें उल्टी दिखाई पड़ती है. सो द इमेज विच इज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड एंड द इमेज विच इज फॉर्म इज एक्चुअली रियल. वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ी छोटी होगी. फाइन. नेक्स्ट, डिटेल्स आर सेम. अगर मान लो यहाँ पे इसमें ग्रीन, येलो, ब्राउन कुछ लाइनिंग्स हैं, तो सेम डिटेल्स यू विल सी इन द इमेज ऑल्सो. आपको ये ब्लैक नहीं दिखेगी. इट इज नॉट अ शैडो, इट इज अ इमेज. इमेज एंड शैडो आर डिफरेंट. शैडो इज फॉर्म जब लाइट के रास्ते में आ जाता है कोई. इमेज इज फॉर्म व्हेन द लाइट पासेज एंड रिफ्लेक्ट. Fine. Then the image is formed. See, the image is formed on the camera screen. Fine. So this is what? The screen. And what is forming? The image. Pinhole camera can be seen in real life. Like जो बहुत घने पेड़ होते हैं बच्चों, तो जो उनकी लीव्स होती हैं, जब सन रेज उन घने पेड़ों पे पड़ती हैं, तो जो पत्तियों के बीच की जो स्पेसेस होती हैं छोटी छोटी, वो पिन होल कैमरा की तरह काम करती हैं. तो सन की इमेज कहाँ दिखाई पड़ती है, वेयर इट इज सीन ऑन द अर्थ. और जो कि सन गोल है, तो जैसे जैसे आपके पिन होल कैमराज होते हैं, छोटे छोटे लीव्स के बीच की जो स्पेसेस होती हैं, दे आर कंसिडर्ड एज पिन होल कैमरा. क्यों? क्योंकि वहां पे आपको सन की इमेज दिखाई पड़ती है. फाइन. सो लेट्स सी
Let's see how image is formed in a pinhole camera. All the flames you can see because these many holes I have made in my pinhole camera. So earlier you have seen one, now you can see many images are formed and they all are inverted. Can you see all the inverted images? So the real image is always inverted, and this is pinhole camera that you have made just in 2 minutes. Okay. So let's see the next topic, that is lateral symmetry. Symmetry means होता है exact copy, same बिल्कुल, ठीक. और lateral means होता है side, means side में भी हो और exact copy हो. जैसे these two hands, fine. Can you see these two hands में exactly similar, okay? See कैसे? ये अगर आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये exactly similar है ना, fine. मगर ये दोनों hand कैसे? दोनों opposite है. तो साइड वाइज सिमिलर मीन्स इफ आई टर्न माई हैंड लाइक दिस, तो ये एक के ऊपर जब एक आए तो ये एग्जैक्टली सिमिलर हो. दैट इज कॉल्ड लेटरल सिमेट्री. सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन. द इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन. देखो ये राइट साइड है ना और ये लेफ्ट साइड है. सो द इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन लाइक इन द प्लेन मिरर. जैसे अगर आप मिरर के सामने खड़े होगे बच्चों तो क्या होगा, अपना राइट हैंड अप करो तो उसमें क्या दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट हैंड, ठीक. तो द इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन इन द प्लेन मिरर, द लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट एंड वाइस वर्सा मीन्स राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट. ओके. So the image form is always laterally inverted. Fine. जो image बनती है, जैसे suppose if I turn my right hand up, fine. तो जो image बनेगी मिरर में वो कैसी होगी, that is my left hand up. तो क्या होगी, दोनों का आप ऊपर रखेंगे तो आपको लगेगा exactly same image है, but actually में it is inverted. Fine. So let's see some of the alphabets. So C, if you see them in the mirror, it will be like C in this way. A को आप ऐसे उठाएंगे, अगर C को ऐसे उठाओ और इसको फिर ऐसे रख दो तो इट इज जस्ट इन्वर्टेड. फाइन. T exactly ऐसा ही दिखेगा. इसी तरह से यू मस्ट हैव ऑब्जर्व एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है. वाई इट इज रिटन ऑपोजिट, सो दैट कि जो आप अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके मिरर में वो जो है उसकी इमेज सीधी दिखाई पड़े. दैट्स वाई इन एम्बुलेंस इट इज रिटन इन्वर्टेड. फाइन. वन मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, लाइक दिस इज P. ये P है ना, इट इज P. अगर इसी P को मैं किस में देखूं, मिरर में देखूं तो ये कुछ ऐसा लगेगा. फाइन. सी, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ P. सपोज बीच में अगर मिरर है तो ये मेरा एक P है. कलर सेम आएगा बच्चों, कलर वेरी नहीं करेगा. अगर ये ब्लू है तो दिस विल ऑल्सो बी ब्लू. फाइन. मगर इमेज कैसी होगी, ये this will be this side and here this will be this side. So the image will be like this. P का ये डायरेक्शन इधर होगा, P का ये डायरेक्शन इधर होगा. फाइन. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ B. अगर आप B को मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, B will be like this. ठीक है. तो आप B को अगर ऐसे टर्न करोगे तो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा. दैट इज नोन एज लेटरली इन्वर्टेड और लेटरल सिमेट्री. द बेस्ट एग्जाम्पल इज योर प्लेन मिरर. So here are the some best examples of lateral symmetry. If you understood the topic well and you got all the concept that I have shown you, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you for watching.